Assalamu alaikum. All right, so I'm going to present my screen and hope everyone can see it clear. अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक दो छोटे-छोटे से सवाल करूँगी और उम्मीद है कि सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके, सो ऐसा कभी हुआ क्या कि जब आप कोई बात करना चाहते हैं, तो वो मिसअंडरस्टूड हो? When you speak, you are often misunderstood, or when you are in an argument, in a conversation, you tend to argue with your family and friends a lot, right? कभी हम दोस्तों से बात कर रहे हो, even अपने पेरेंट्स वगैरह से या और फैमिली मेंबर्स से, तो हमारी बात होते-होते एक heated argument में कन्वर्ट हो जाती है और फिर हम उसको वाइंड अप नहीं कर पा रहे होते. So if that happens, that's a very common, very usual thing that happens a lot. It's nothing unusual about that. When it happens, that means that we are having a real hard time in breaking down our communication into an understandable chunks of information, right? So we have find difficulty in conveying our feelings or opinions to others with a touch of difficulty. So even when we're trying to try hard, sometimes it just gets the other way. No matter how hard we try, it seems like we are not being understood or we're not being listened to, and there are some problems with that, right? So I'm here today to take you along to a session in which we will be talking about the problem I've just mentioned. I'm Iram Tasleem, and I'm a public speaking and soft skills coach. Let me take you along in this topic today, which is effective communication and presentation skills. So, believe you me, once you're clear with the effective communication and the techniques of it, of course, you are a great presenter, right? So, this is one of the presentation skills that we need to upgrade and upscale ourselves in. जितनी मौसर हम बात कर सकते होंगे, इतनी ही अच्छी हमारी प्रेजेंटेशन चलेगी. तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. आई होप कि आफ्टर दिस सेशन यू आर to a next level of your communication. Fine. So today we are focusing on the three learning outcomes. We will be looking into the three different styles of communication. And in order to acquire skills for assertive communication and conflict resolution, what is needed, that will be our agenda. And then also using that in case of using them, these skills into our presentations as well. So that's the outcome for today. When you look at this picture, what is there in your mind? Like what's happening in the picture? Take a while. Yes. Apparently, there are people, and probably they are trying to make some communication. Yeah. And it's a lot chaotic, right? So, yes, that actually happens. हम जब बात करते हैं तो बात का कहते हैं ना बतंगड़ बन जाना और बात आपस से बाहर हो जाना, बहुत हीटेड हो जाना, तो इस सारी सिचुएशन में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि अर्ली एज ही से बच्चों को और एडल्ट्स को हमें कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाहिए, बिकॉज दिस इज considered as a life skill, not just like an ordinary skill, because every single activity around you, every single engagement around you is involving a good part of communication. No matter how good skilled you are, no matter how strong the degree you have got, but if you're not good in your communication and passing out your ideas nicely and effectively, then probably there's a problem. You would lose many opportunities in life, right? So उर्दू में कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम एक दूसरे से, इट्स नॉट द कन्वर्सेशन, माइंड यू, राइट? कन्वर्सेशन यानी जैसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेट का मतलब ये है कि जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं उससे एक राब्ता बन रहा है हमारे बीच, और उस राब्ते का मीनिंग भी वही है जो हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है?
तो ये हमें आना चाहिए कि हम अपनी बात कैसे करनी है, किस तरह इसको मीनिंगफुल बनाना है और इससे जो भी हमारा डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है उनको मीट करना है। Right, a question for you. Do you think that it is ever possible not to communicate at all? Take a while and explain if it is so, and even if it is not, share your opinion. Right? Or ठीक है, अ, इस बात पे हम एग्री करेंगे कि इस तरह पॉसिबल नहीं है कि हम कम्युनिकेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारी सोशल नीड्स हैं, हमारी सराउंडिंग्स हैं, हम इंडिविजुअल सोलो मेंबर्स नहीं हैं इस दुनिया में, हमारे साथ लोग मुंसलिक हैं, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू कम्युनिकेट एंड say out what is needed. However, yes, of course, there might be some ways to communicate it non-verbally, just using gestures and body language. You still say out something, but कम्युनिकेशन होगी, वर्बल होगी, यानी हम कुछ अल्फाज इस्तेमाल करके बात करेंगे या फिर ओरली होगी, बगैर अल्फाज के कुछ इशारों से हम बात कर सकते हैं, जैसे हम कोई जेस्चर्स यूज़ कर सकते हैं, कोई फेस एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं और अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। सो इन ऑल मीन्स कम्युनिकेशन तो होती है। Can you take a minute to complete the phrase? Communication is. Take your time. Amazing. So let's see. Communication is the process of exchanging thoughts, messages, information between two or more people, right? So जब आती है बात कम्युनिकेशन की, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक बंदे से बात कर रहे हैं, आप काफ़ी लोगों से भी बात कर सकते हैं। इस वक़्त मैं एक पूरे हॉल में जितने लोग ऑडियंस बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो एक राब्ता करने का तरीका, एक एक प्रोसेस जिससे हम एक-दूसरे को अपना पैगाम पहुँचाते हैं, अपनी मालूमात शेयर करते हैं, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो राब्ता बेसिकली राब्ता एक कारआमद राब्ता या एक कम्युनिकेशन का जो है प्रोसेस है ये। बट व्हाट इफ इट इज़ द कम्युनिकेशन, देन व्हाट इज़ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन? यानी कि एक मौसर बात करना, मौसर कम्युनिकेट करना, मौसर तरीके से कम्युनिकेट करना, वो फिर क्या है? Right? Let me give you some clues. Yeah. जी। तो मौसर तरीके से बात करना एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम बात को इसी तरह समझेंगे जिस तरह से कही जाएगी, और जितनी हमारी कोशिश हो हम इसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं अगर हम अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करें। Sometimes we just listen to listen. We are not paying actual attention. So we need to work on that, and we have to do an active listening. What is being said should be taken that way. Then make sure that you have an eye contact, right? आई कॉन्टैक्ट इज़ ज़रूरी, चाहे मैं आपके साथ ऑनलाइन बात कर रही हूँ, मेरा आई कॉन्टैक्ट आपके साथ होना चाहिए, ताकि आपके साथ एक कनेक्शन हो और मेरी बात आप तक पहुँच सके। If I'm looking around and talking to you, you would be looking around as well. Okay, so it should be a good way to have an effective eye contact in order to communicate properly. Then, if there is no feedback, unfortunately, I'm unable to get a feedback at the moment, or physical feedback, but yes, we can use gestures, we can use thumbs up, thumbs down, or any other gesture in order to stay communicative, right? So, एक response आना चाहिए, communication में कोई feedback होना चाहिए जिससे अंदाजा हो कि जो बात की जा रही है वो उस तरह से समझी जा रही है। Then the last criteria of an effective communication is said to be sending out a clear message. If there is ambiguity, if the message is not clear, it's blurry, it's this is what it looks like, right? There are so many unclear parts in that communication, that message that's not understood the way it should have been understood, right? So if it's a clear message, everything is understood that way, is vivid to imagine and proceed with. But if it is not, it looks like a blurry message with so many uh, questions maybe and ambiguities and complexities. So बात करते हुए बहुत क्लियर बात करें, इसमें कोई पेचीदगी ना हो, आसान भाषा में बात करें और क्लियर बात करें, इसमें
जैसे कि आप कह लें कि ज़ुबानी बात ना हो, मल्टी लेयर्ड बात ना हो, और अगर इस तरह हो रहा है तो इट्स बेटर टू आस्क अ क्वेश्चन, डू यू मीन टू से सो आपकी बात जिसे आपको समझ में आ रही है वो वेरीफाई हो जाए कि इसी तरह है या किसी और तरह। ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग, आई कांटेक्ट, responsiveness, or clear message sending are some of the criteria of effective communication. Now, can you imagine what may go wrong if the communication is not effective? That is also possible. We are saying it should be communicated, but think of the possibility when it may go wrong. What could be the maximum? Yes, of course, miscommunication will occur when there is no effective communication and the message is not being perceived that way, it's not being understood, arguments arising. That surely means that we are miscommunicating, but that may lead to a big conflict, right? Come on, what's conflict? Give me some words, at least 4 words, to talk about conflict. Okay, I might hear fight. Yes. Then, all right, fight, argument. Okay. Yes. Dispute. Fine. What else? Yes. Oh, battle. Yeah. Punch, battle. You never know what sort of communication is going on. Quite possible. So ultimately, what is going on is that there is a disagreement happening. Yeah. So all of these words lead to a conflict, which means there is no agreement going on between you and I and the conversation that we are having. So that means we need to do something about that. We cannot, there are ways you can leave this conflict as it is. We can walk away. We can just, bang the doors and leave out and walk out, but that is not going to solve the problem. So we need to be assertive in our communication. Now, looking at this picture, if I ask you or if I tell you there are one, two, three, three people or maybe four people who are on top of the um, ceiling, right? Do you agree? Yeah. So if I look from my perspective, I see people on the roof. If you see from your perspective, maybe you are looking people who are ceiling and they are trying to climb or something like that, right? But we cannot say only if I am right and you're wrong or you're right, I'm wrong. This is the perspective. If you look at the perspective, that changes the story altogether. Right? So one perspective is very true that yes, this is something related to people climbing, yeah, from this side. They are probably, or it looks like they're also on the roof, yeah. Looks like so, yeah, because this border is edging outwards. So that's quite confusing. And if you look at this border, that's also saying that people are already on the roof. Whatever, the thing is, you might be right, I might be right. We need to say it out clearly. Okay. What I want to say, why I think this part of the picture is telling me that people are under the roof or people are on the roof, you need to explain that clearly. Right. When this doesn't happen, a lot of unpredictable emotions they flow out, which may make us grumpy, frustrated, angry, unsatisfied, right? Shocked. So in order to avoid that, we need to tone down. Otherwise, if I persist on the same point, oh, you just don't seem to understand. I'm saying this and this and this, and the argument is on and on, then it's getting way too much unpredictable what's going to happen next. Sometimes people get into a very heated up argument that they end up fighting with each other, which is, of course, not
a good ending to any sort of conversation. Agree? Right? So in it happens like we come to a point when it gets beyond our control that we lose the target of like our conversation. We do not stay calm, and the objectives of our communication is already gone. ठीक है? तो इस पॉइंट तक, इस नहज तक हमारी बात पहुँच जाती है कि हम एक-दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं और ऐसा होता है कि हम जो बात करना चाह रहे हैं वो तो एक तरफ रह जाती है और हम किसी और रुख पे चल पड़ते हैं और यही साबित करना शुरू कर देते हैं, नहीं तुमने ये कहा उसका मतलब ये था, मैंने ये कहा इसका मतलब ये था। तो हम अपनी एनर्जी जो है वो किसी और जगह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना सुकून बरकरार नहीं रख सकते और हम अब उस रुख से हम बदल जाते हैं, जो हम बात कर रहे थे उस बात से हम हट जाते हैं। इस चीज़ को हल करने के लिए ज़रूरी है कि हमें एक टेक्नीक है कम्युनिकेशन की व्हिच इज़ कॉल्ड असर्टिव टेक्नीक, ठीक है? और हमें ये टेक्नीक सीखनी है और हमें ये आना चाहिए कि हमने अपनी रीडायरेक्ट कैसे करनी है कन्वर्सेशन। Assertive communication is all about honesty. It's all about the confidence and the clarity that brings in your expressions and your feelings and beliefs and thoughts. So when you're clear about what you want to say and you say it appropriately, repeat it clearly, then that means you are trying to make your point very clear in a very respectful way, right? So why is assertive communication important? Because it sets some respectful boundaries between you and the listener, राइट? प्लस ये होता है कि इसमें हम नेगेटिव फीलिंग्स अवॉइड करते हैं और हम किसी और के भी जज्बात को हर्ट किए बगैर अपनी बात आराम से कर सकते हैं। दैट इज द मेन एम। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दिस टेक्निक इन अ लिटिल व्हाइल। एंड इसी तरह अगर आप ये देखो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे जो हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें से एक अच्छी महज़ब असर्टिव कम्युनिकेशन कहाँ हो रही है? हुँ, हुँ। टेक योर टाइम। बिल्कुल सही। Right? So if I look at the very first picture, that is an assertive style. Why is that so? Both of the people seem to be listening to each other and probably they are taking turns to talk. बारी बारी बात कर रहे हैं और हर बंदा अपनी बात पूरी तरह समझा रहा है, दूसरा उसको listen कर रहा है. Then the other person will talk and the other person will listen. Okay? What's happening in this picture? Cute little girls. What are they doing? Do you think any communication happening here? Maybe, maybe not. Yeah. So they both seem annoyed, नाराज नाराज से लग रहे हैं बच्चे। लेकिन ये एटीट्यूड बच्चों में नहीं है, ये हम बड़ों में भी पाया जाता है। इमेजिन अ सिचुएशन जब आप अ, किसी से नाराज हैं और अगला बंदा आपसे एक्सक्यूज कर रहा है और आप प्रिटेंड कर रहे हैं आई डोंट केयर, ओके व्हाटएवर, दैट डजंट बॉदर मी, आई एम फाइन, टेल मी, अगर आपको आपको मेरी कोई बात बुरी लगी तो बताएं, नहीं नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है, right? So what is happening, you are trying to close yourself, you're not opening up to accept and listen to another person's viewpoint. Maybe there's something that is not understood clearly and the other person can try it to make it clear now, but whatever you have thought, you have started believing that नहीं इस बंदे ने ये बात जो है ना इस सिर्फ इसलिए किया कि मैं नाराज हो जाऊं या मैं अनॉय हो जाऊं, तो हम अपना इख्तियार जो है अपने इमोशंस से हम लूज़ कर देते हैं और हम थोड़े से स्टबर्न हो जाते हैं, राइट? सो दिस communication style is a passive style where people just try to pretend they are clear, they don't have any problem, and but that is not actually a right reflection. So इसमें क्या होगा कि आप गेट अलोंग भी कर रहे होगे लेकिन आपके दिल में एक खलिश कहते हैं ना रह जाती है कि नहीं ये बात हमारे बीच में थी और ये आपने सही नहीं की थी और हम इसी मूड के साथ आगे हम चलते रहते हैं। हमारे अक्सर रिश्तेदारों में ये प्रॉब्लम्स आती हैं जो वो उन्होंने सोच लिया बस उसके बाद हमने उस चीज़ को क्लियर भी नहीं कर सकते और हम इस चीज़ को लॉन्ग टर्म में कैरी भी नहीं कर सकते। Okay, so we have to avoid this passive style of communication. We should open up, we should open to a dialogue and be assertive in style. Now, what's in this picture? Kinky. Yeah, clearly says like shows that people are in a
position of blaming each other. It's like more of the you did this and that was wrong, because of you this happened and that happened, right? So you attitude जो है हमें ड्रिफ्ट कर देता है, अगेन हम अपनी गलती भी दूसरों में ढूंढ रहे होते हैं, या फिर हम दूसरों को एक्यूज करना शुरू कर देते हैं. दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. समटाइम्स चीज़ें स्मूथ चल रही होती हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी को पॉइंट आउट करते हो तो बात बिगड़ जाती है कि तुमने ऐसा सोचा भी क्यों. आप किसी को सजेशन देना चाह रहे हो, नहीं आपने ये बात की क्यों, राइट? सो यू गेट एग्रेसिव, और उसमें भी आपकी कम्युनिकेशन बहुत ख़राब हो जाती है, और आपके पर्सनल टर्म्स भी एट टाइम्स जो है वो बिगड़ जाते हैं. सो वी शुड अवॉइड बोथ ऑफ दिस एंड दिस. The good part is to pick assertive style of communication. Now let's look into this conflict resolution, right? Until now we have got to see that conflict तो आ जाता है, अब उसको हमने resolve कैसे करना है, हल कैसे निकालना है, मसले का हल कैसे निकालना है. तो अगर हम कम्युनिकेट अच्छा कर सकते हैं, अगर हमने ये स्किल सीख लिया है, ये वाला कम्युनिकेशन स्किल जिसमें हम एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अगेन पॉइंट है कि आपने सिर्फ अपनी बात नहीं अंडरस्टैंड करवानी है, आपने दूसरे बंदे का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, राइट? अपनी बात तो की, लेकिन अगर वो कोई बात कर रहा है जो कि गलत है, या जो उस तरह नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं, दैट मीन्स दैट पर्सन इज लुकिंग, यू नो, from a different perspective. That's a different point of view. We should value that point of view, and we should understand, like, oh, okay, मैं समझ रहा हूँ, आप probably आप शायद इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि आपको ये लगा होगा, लेकिन मेरा मतलब ऐसा नहीं, ठीक है? And you can carry on. Right? If we do that, if we learn that art of communication, then we can help resolve conflicts in a very, very positive way. That's the ultimate goal, right? हमने लड़ाई झगड़ा किए बगैर अच्छे सलीकामंदी से, अच्छे शहरियों की तरह, अच्छे सिविलाइज्ड मैनर में हमने अपनी बात को उससे बचाना है, कॉन्फ्लिक्ट से बचाना है, ठीक है? ये तो अब तक हमें पता चल गया है कि अगर हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ये चीज़ें तो काम नहीं करने वाली. वी शुड अवॉइड येलिंग, वी शुड अवॉइड रिफ्यूजिंग टू कॉम्प्रोमाइज, वी शुड अवॉइड नेम कॉलिंग एट एनी केस, राइट, एट एनी कॉस्ट. किसी को हम बिलिटल ना करें, छोटा हकीर ना समझें, और एकदम बात बीच में छोड़ के चले ना जाएं. All these are passive or aggressive kind of behaviors which we do not want to have, right? So होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हम मिल के एक सिनर्जी क्रिएट करें, एक अच्छे तरीके से हम बात को कन्वे करने का आर्ट सीखें, जिसमें हम अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करें, और फिर किसी एक रेजोल्यूशन की तरफ आए, किसी एक हल की तरफ आए, ठीक है? इसको कहते हैं विन विन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. देयर आर मेनी वेज टू वर्क आउट अ कॉन्फ्लिक्ट, in which one of the effective technique is a win-win conflict. Why is it a win-win? That because this caters to both the needs, both parties need. What you're saying is also considered. What I want is also considered. Let's come to a point where we both, agree to go along. So, for example, like a belief that everyone can win by cooperation and avoiding competition and comparison, right? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब भी हम बात करें तो हमें एक दूसरे को खोटा नहीं साबित करना, ठीक है? तुम्हें तो पता ही नहीं है यार, तुम कहाँ से आ गए, तुमने तो कभी ये देखा ही नहीं. मैं जिस शहर की बात कर रहा हूँ, जिस मुल्क की बात कर रहा हूँ, तुम तो वहाँ पे कभी गए नहीं, तुमने तो अपने ख्वाबों में भी ये जगह नहीं देखी होगी. So all this is very egoistic and very unacceptable attitude in communication. It's very negative value that creates negative, emotions. It evokes emotions negatively in other person. So apparently maybe लोग जाहिर ना करें, लेकिन ये एक नेगेटिव वो आपका इमेज क्रिएट करता है, और इन लॉन्ग टर्म कोर्स एक आपका ऐसा ही इमेज बन जाता है कि आप तो बहुत बोस्टिंग करते रहते हो, और आप तो जो है वो again proud and this and that. So we should be avoiding that at all the cost. Okay, now what is a win-win conflict resolution? You need to identify the problem, right? सबसे पहले तो आप मसला फाइंड करें, भी मसला है कहाँ, प्रॉब्लम है क्या, ठीक है? So अगर आपकी बात बिगड़ गई है कहीं पे, right away stop, try to use an I statement, which means I feel there is something wrong. I feel you haven't picked my point as I wanted to convey. मेरा ख्याल है कि आप गलत समझ रहे हैं, आपको कुछ गलत फहमी हुई है. मे बी आपने ये स्टेटमेंट सुनी हो, मेरा ख्याल है आपको कुछ गलत फहमी हुई है, ठीक है? That's a very good way to start and revisit your argument, revisit your point, and see what are your concerns, what did you want to convey, and then bring it to that point, right?
I think this is not what I meant. Maybe we can think of the other way around. For example, आप कह सकते हो कि मेरे ख़्याल से आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन अगर हम इसको उस तरह से समझेंगे तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा, राइट? एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ फॉर एग्ज़ाम्पल यूजुअली हम आई स्टेटमेंट का एक टेम्पलेट बताते हैं बच्चों को और वो जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें उनके लिए आसान हो जाता है इसको एक रूटीन में हैबिट बनाने के लिए, ठीक है? जैसे कि आपने आपने जैसे परमिशन लेनी है अपनी अपने पेरेंट्स से कहीं जाने की वीकेंड पे, तो आप उसको और बात आपने की है लेकिन वो उस तरह से समझी नहीं जा रही, पेरेंट्स आपको डिसअलाउ कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर एक स्ट्रक्चर से बात करोगे तो आपकी बात मस्ट मानी जाएगी, नो, लेकिन आपको बात करने का तरीका आना चाहिए, सलीका आना चाहिए, ठीक है? तो आई स्टेटमेंट्स हम यूज़ करते हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए और उसको लिंक करते हैं अपनी बात के साथ। दूसरा तो ऑफ कोर्स हमने अभी बात की कि एक्टिव लिसनिंग हमें यूज़ करनी है और दूसरे बंदे का भी पॉइंट ऑफ व्यू एक्नॉलेज करना है, ठीक है? उसके बाद अगर कोई मसला है तो हमें कोशिश करनी है कि मिल के हम मल्टीपल सॉल्यूशंस फ़ोरसी करें और फिर डिस्कस कर लें कि इनमें से बेहतर क्या है, ठीक हो गया? और अगर ऐसा हो जाता है तो दैट मीन्स प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड। देयर वी गो। ठीक है? तो छोटी-सी एक्टिविटी करते हैं और ट्राई करते हैं कि हम एक्टिवली लिसन भी करें और अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करें। मैं आपको कुछ सिनेरियोज़ पेश करने लगी हूँ। I'll be presenting you two scenarios, okay? So you can split your teams as your facilitator may group you, and you're going to brainstorm all sort of possible solutions in that situation. सो सिचुएशन 1 क्या है कि आपने 2 सिनेरियोज़ मैं आपको दूँगी, उन दोनों आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हो, बट इट वुड बी अ गुड थिंग दैट इट्स डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल द ग्रुप मेंबर्स, ठीक है? जैसे 2 ग्रुप आपका सिचुएशन 1 कर लें, 2 ग्रुप सिचुएशन 2 कर लें, फिर मोर ग्रुप्स डू इट अकॉर्डिंगली, राइट? लेकिन आपने अपनी सॉल्यूशन निकालने में यकीन इसको इसको मद्देनज़र रखना है कि आप दूसरे बंदे का भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखेंगे। सिर्फ़ ये नहीं कि भी आप क्या चाह रहे हैं, बल्कि अगर इसमें दूसरा बंदा इफ़ेक्ट हो रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और उसको भी आप मद्देनज़र रखते हुए फिर आप एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, ठीक? तो जनाब सिचुएशन 1 क्या है कि जी आपके पास एक गाड़ी है और आप और आपके भाई जो हैं, भाई साहब जो हैं वो दोनों गाड़ी को एक ही टाइम पे यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है? यू नीड टू गो टू अ मीटिंग टुनाइट व्हाइल योर ब्रदर वांट्स टू विज़िट अ गर्लफ्रेंड। मसला आ गया भई, गाड़ी एक है और बंदे 2 हैं और टाइम भी सेम है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करें, ठीक है? तो ब्रेनस्टॉर्म करें 1, 2, 3, 4, 3 मेंबर हैं तो 3 सॉल्यूशन निकाल लें, 4 मेंबर हैं तो 4 निकालें, इस तरह आप इसको ग्रुप में वर्कआउट करें। सिनेरियो नंबर 2 देख लें, फिर आप आपस में डिवाइड कर लें। केक कटिंग, यू आर द इन चार्ज ऑफ अ बर्थडे पार्टी, ठीक हो गया? और उस पार्टी में 4 बच्चे हैं जी जिनके लिए केक काटा जा रहा है। केक आपके पास सिर्फ़ 1 है लेकिन आपने इसको इक्वल पार्ट्स 4 इक्वल पार्ट्स में कट आउट करना है। केक आपका स्क्वायर भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, व्हाटएवर, सो दैट रियली डज़न्ट मैटर। आपने उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे कर सकते हैं आप? किस तरह बना सकते हैं? अपना सैंपल लेकर आएँ और बताएँ, सजेस्ट करें, ठीक है? तो ये 2 सिनेरियोज़ हैं, चेक करें कि इसमें आप किस तरह से ग्रुप वर्कआउट कर रहे हैं। ये मैंने आपके लिए लिस्ट डाउन कर दिए दोनों एक ही साथ पे ताकि मैं इसको प्रोजेक्ट कर दूँ और आप लोग इसको ज़रा वर्कआउट करें। ठीक, तो बारी-बारी ग्रुप एक आ जाए और इसको रिप्रेज़ेंट करें कि आप लोगों के सॉल्यूशंस क्या हैं।
ऑलराइट, सो आप अपना टाइम लें और यहाँ पे आप पॉज भी कर सकते हैं स्ट्रीम को, और ग्रुप बाय ग्रुप एटलीस्ट 2 डिफरेंट ग्रुप्स आके अपनी थॉट शेयर करें। अगर आप 4 मेंबर्स हैं तो 4 सॉल्यूशन लेकर आएँ अपने प्रॉब्लम का एटलीस्ट, ठीक है? हर मेंबर एक आइडिया कंट्रीब्यूट करे, दैट्स अ वेरी गुड टीम वर्क दैट शुड बी बिल्ट इन, डेवलप इन आवर टीम्स। और उसके बाद आप जब शेयर कर लेंगे तो मैं भी अपना छोटा-सा जो सॉल्यूशन मैंने निकाला है वो भी शेयर करूँगी। But of course, there could be many solutions to your problem, और आप अपना एंगल शेयर करें, मैं भी कुछ हो सकता है हमारी कॉमन सॉल्यूशन उसको हम एंड पे देख लेंगे। जनाब, तो ये है आपका कार शेयरिंग के मल्टीपल सॉल्यूशंस। ऐसा भी हो सकता है कि 2 भाई हैं तो उनमें से एक बंदा जो है वो पहले छोड़ दे और फिर गाड़ी ले जाए। दूसरा ये हो सकता है कि जिस बंदे ने जाना है वो किसी दूसरे बंदे के साथ चला जाए जो उस रूट पे जा रहा हो, ठीक है? या फिर जिसकी मुलाकात दोस्त के साथ है, वो दोस्त घर पे बुला लें उसकी तरफ जाने की बजाय। अल्टीमेटली टैक्सी, बस, एमआरटीज़ वगैरह तो अवेलेबल हैं, उसको भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना? जब इतने सारे सॉल्यूशन आ जाते हैं, तो उसके बाद हमने इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करना है कि कौन-सा हम दोनों के लिए बेहतर है। क्या फ़ीज़िबल होगा कि मेरा दोस्त घर पे आ जाए? क्या फ़ीज़िबल है कि तुम एमआरटी यूज़ करके जाओ? ज़्यादा टायरिंग तो नहीं होगा, ज़्यादा बजट ओरिएंटेड तो नहीं होगा, ज़्यादा दूर तो नहीं होगा, वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो आप इवैल्यूएट करें। यू गॉट द आइडिया? सो आपका प्रॉब्लम आया, उसके बाद आपने ब्रेनस्टॉर्म किया, उसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की, फिर उसको भी आप कम्युनिकेट करें। ऐसा नहीं कि भैया इम्पोज़ करें, नहीं, ऐसा हो सकता है, तुम यार ये क्यों नहीं कर लेते, तुम वो क्यों नहीं कर लेते? For that, that's a very normal way we get to see people around us. They try to impose their thoughts and गलत तरीके से जो है वो फिर बात करते हैं, और फिर जो समझ रखते हैं बेहतर है और उसी को फिर हम लेके चलते हैं। अच्छी बात है कि आप अगले बंदे का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखें, उसकी प्रॉब्लम भी समझें, और अगर वो एग्रीड है तो चलें हम ये इस पॉइंट, तुम्हें कोई मसला तो नहीं है अगर ऐसा कर लूँ मैं? यू श्योर? चलें, लेट्स गो, ठीक है? फिर आप अपना सॉल्यूशन निकालें। केक देखते हैं जनाब, केक किस तरह से काटा है। मैंने तो 4 हिस्से इस तरह किए, फिर इस तरह किए, फिर इस तरह वर्टिकल में भी कर लिए, हॉरिज़ॉन्टल में भी कर लिए, और अगर हम सब एग्रीड हैं यार कोई मसला नहीं, ऐसा भी कट कर लें, तो हमने इसको एक रैंडम तरीके से ज़िग-ज़ैग पैटर्न में भी कट कर दिया, ठीक है? अगर आपके पास कोई और सॉल्यूशन है, या आप समझते हो कि आपने सर्कल केक को स्प्लिट किया, या आपका केक ट्रायंगल था, या आपका केक एक टॉवर था, ठीक है? तो देखिए कि किस तरह आपने अपना सॉल्यूशन निकाला। अगेन बात ये है कि आपने अपने सिनेरियो के हिसाब से डिस्कशन करनी है और उस मसले का हल निकालना है। मसले का हल तो ज़रूर निकल आता है, थोड़ा-सा हमें टाइम लगता है, थोड़ा-सा हमें गौर करना पड़ता है, और अच्छी बात है कि हम गौर करें ताकि गौर व फ़िक्र से हमारे मामलात अच्छे हों, हमारी अंदर तहज़ीब आए, गुफ्तगू करने का तरीका अच्छा हो, और उससे हम एक-दूसरे को भी बेनिफिट दें, और एक अच्छे सिविलाइज़्ड शहरी की तरह हम आगे अपनी नेशन को बिल्डअप करें। ठीक है? तो ये था जनाब आज का सेशन। अगर मैं इसको सम अप करूँ तो हमने बात की है आज एग्रेसिव, पैसिव एंड असर्टिव स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन, और हमने ये भी देखा कि रिलेशनशिप जो भी हो, कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही, तो हमें उसको एक असर्टिव स्टाइल के साथ वर्कआउट करना है, और एक विन विन प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन हमने निकालना है, ताकि हमारी रिलेशनशिप ख़राब ना हो किसी के साथ। वो रिलेशनशिप हमारा टीचर स्टूडेंट का भी हो सकता है, बॉस कलीग का भी हो सकता, सबॉर्डिनेट का भी हो सकता है, हमारे कलीग्स का भी हो सकता है, और हमारे पेरेंट्स का भी हो सकता है, ठीक है? और अगर हम इस चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हम रिलेशंस को भी सेव कर लेंगे और अपने मकसद को भी पा लेंगे, ठीक है? बस इसके बाद मैं सम अप करूँगी, सम अप के बाद मैं आपसे इजाज़त माँगूँगी। आप मेरा ईमेल एड्रेस नोट कर सकते हो, यू कैन स्टे इन टच विथ मी ऑन माय व्हाट्सएप, दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर, you can stay in touch here, talk to Miss Amreen and get the details. If you're interested in any kind of future workshops or future courses that you want to take personally, please let me know. That'd be my pleasure to help you out. All right? Thank you so much. Assalamu alaikum. Bye-bye.